Yes. So today is 14th of April, our Bengali New Year. So wish everybody, Happy New Year. I think, many parts of India, we follow this New Year, right? Even in Punjab, I hope. Sumit ji, आपके उधर न्यू ईयर कब होता है? सर ये बैसाखी होती है, ये 13 की जो है ना, और प्लस जब हाँ, नवरात्र बैसाखी। होते हैं तो शुरू होता है नया साल। तो आप लोगों का कौन सा कैलेंडर? हिंदी कैलेंडर, राइट? यस यस यस। तो वो कब से शुरू होता है? वो कब से सर शुरू वो होता आज है? से ही होगा, जब ये सन का ट्रांजिट होता है ना एरीज में, हाँ हाँ। तब से ही होता है सर। अच्छा, वो तो 21 मार्च, मतलब उगादी जब बोलते हैं, जब होता है इधर। अच्छा, ये साउथ में नहीं वो। सर, वो आज हो गया ना सर, ट्रांजिट ऑलरेडी कल आज हुआ तो है, सॉरी वैशाख। कल कल हाँ, कल हुआ है कॉलेज से। नहीं, सन एरीज तो बहुत पहले हो गया था, 21 तारीख को, मार्च। नो ये सर, आज। वी फॉलो दिस इंडियन वन ना, तो उसमें तो कल हुआ है सर। अच्छा, वैदिक में। ओके, वो तो हो सकता है। सुमित जी, आप दिल्ली नॉर्थ से हो, राइट? दिल्ली से। दिल्ली, दिल्ली सर, दिल्ली। हाँ, दिल्ली से। तो आज देखिए, आज मेरा मतलब थ्योरी तो हमने आपको सब सिखा दिया है, राइट नाउ। आपके ऊपर है, आप कितना बैक टेस्ट कर पाएंगे। एंड ये 3 दिन में रखा था सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन आज तो अटेंडेंस काफी वो है। तो मैं आपको एक सेटिंग देना चाहता था निफ्टी के लिए। आप लोग लिख लीजिए। तो दिस इज अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? एंड दिस इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट? सो यू कैन जस्ट सेट दिस स्क्वायर ऑफ 9 to 36 डिग्रीज, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। गैन स्क्वायर ऑफ 9, राइट? वो उसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लीजिए ब्राउजर में। इधर इधर आपको दिखेगा, आपको ये 3 डॉट्स में जाएंगे तो अगर कोई अपडेट है तो इधर दिखेगा। नहीं तो ब्राउजर रिफ्रेश करके रिमूव करके फिर से ऐड कीजिए, आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। तो इसका 36 डिग्रीज रखना है, राइट? दैट इज गुड फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम, दैट इज वेरी गुड। ये आपका ये जो थिक ग्रे लाइन है, ये आपका स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है? एंड दिस इज 36 डिग्री एंड 36 डिग्री, लाइक दैट. And important crosses will be marked with, this color lines. The like 180 degrees is an important line, and this is 360 degree, right? And since this is multiples of 36, 90 degree यहाँ पे नहीं आता है in the same square, which is fine, right? You don't have to worry about it. But your 144 level is also important level. So this square, can act as a resistance zone, right? Similarly, here, this one. But anyways, price is too far away from there. So how you can trade this, right? See, first you have to observe, at least one period, which is, I've set my time cycle also to 36 bars. Same, whatever angle I have chosen the same value here. Only 36 को आपको set करना है, and then set it to the first bar of the day, right? So that is your basic setting for intraday. तो पहले 36 मिनट्स आपको ट्रेड नहीं करना है। इवन इफ यू वांट टू स्किप 1 or 2 टाइम फ्रेम्स, दैट्स ओके। आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए प्राइस कहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, राइट? आई मीन, वेयर इज द फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बीइंग मेड? So clearly, this is the level, at around 36 degree from the start, where price made the first pivot, right? Then came down again, to the starting level, and then took the support here. So now, see, it is perfectly okay for you to have gone short below this level, right? But you have to wait for the time to complete and then short. Now, if you let the time to complete, what has happened is price went up and then closed below. Now, this could be a short condition for you, right? Because it did not want to go up. It gave a direction that it wants to go down. तो आप यहाँ पे short कर सकते थे for one target or 2 targets, whatever, right? So rule is that once you get the first target, you are out 50%, and remaining you are trailing at cost, right? So in that case,
you made 50% क्वांटिटी में आपने प्रॉफिट बनाया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया, राइट? एंड देन अनदर टाइम साइकिल केम, another consolidation and then breakout. So either you could have, see, if you take this as the pivot, the support level, you can go long here. But since the time cycle is coming, you can just wait and see what it is trying to do. It took the support here and then you can initiate a long right in this zone. यहाँ पे आप long initiate कर सकते हैं. Anyways, your उसका जो short का जो stop loss है यहाँ पे कट जाएगा, right, at the cost, and you can initiate your long here. Okay, and then you should always, in the beginning, right, my suggestion is do 1-2-1-2. मतलब फर्स्ट टारगेट में आप 50% बुक कर लीजिए, सेकेंड टारगेट में आप 100% बुक करके आउट हो जाइए, राइट? सो इफ यू डिड दैट, यहाँ कॉल पे में भी आपका चलेगा? 50, हाँ, कॉल में भी ना, खाली निफ्टी में? कहीं पे भी, वट एवर स्टॉक यू आर ट्रेडिंग, जस्ट डू 1-2-1-2. When you are back testing also follow the same strategy, right? First target 50%, second target 100% book करके भाग जाइए, and don't trade that stock for the remainder of the day, especially if you made profits. Okay, तो ये रूल आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दो टारगेट लेना कई बड़ी बात नहीं है in this kind of volatile market condition. If you just get 2 targets every day, that's more than enough. 2 targets is equivalent to almost एक टारगेट आपको करीबन 60 पॉइंट्स के आसपास देगा, एंड 2 टारगेट्स मीनिंग 120 पॉइंट्स, राइट? नाउ इफ यू डू इट इन फ्यूचर्स, ऑफ कोर्स यू कैन टेक ऑल द पॉइंट्स. सो मतलब मान लीजिए आपका एक टारगेट में 60 पॉइंट मिला, 75 into 60, विच इज रफली 4,500 रुपीज, राइट? और एक लॉट में आपने 2 टारगेट लिया 120 का, तो हो गया 9,000 रुपया, राइट? 9,000 प्लस 4,500, सो इट्स 13,500 रुपीज. So for a day, 13,500 is a very decent income on just 2 lots with, very little, I mean, with robust risk management and all that, right? Your risk was very small. I mean, आपका stop loss छोटा था, आपका profit is quite big considered to that, right? And if you can do 13,500, let's say 10 दिन भी कर लिया, right? Then you have earned more than 1 lakh with just 2 lots of Nifty. And you can try it on any other stock which is which has movement, right? आप डिक्सन में ट्राई कर सकते हैं आप. there is a bunch of stocks I have. I can give you that list. So I follow this list, right? Nifty, Sensex, ABB, Coforge is very good, gives very good movement. Dixon, Siemens, Trent, Divis Lab, Maruti. तो आप देख लीजिए, आप 2-4 स्टॉक्स चूज कर लीजिए. एनीवेज यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज मोर देन एक या 2 ही ट्रेड आप ले पाएंगे. तो उस हिसाब से आप लीजिए ताकि मैनेज कर पाए, स्पेशली इन द बिगिनिंग. एंड माय सजेशन इज वॉट एवर यू चूज, फॉलो वन स्ट्रेटेजी, राइट? आप अगर पंचोली को फॉलो कर रहे हैं, पंचोली को फॉलो कीजिए, राइट? सी, इन द केस ऑफ पंचोली द लेवल्स आर डायनामिक, मीनिंग अगर पिछले दिन का हाई लो बहुत दूर है, बहुत अपार्ट है, तो वो लेवल्स भी बहुत दूर होगा. अगर आप कहीं कहीं दिन देखेंगे कि लेवल्स, एक दो लेवल्स के बीच ही 100 पॉइंट्स का दूरी है, राइट? और कहीं कहीं दिन देखेंगे क्योंकि वो लेवल नैरो रेंज पे था यस्टरडे, तो लेवल कंप्रेशन हो गया, तो इस लेवल भी कंप्रेस हो जाएगा, राइट, अगले दिन. So Pancholi is a very dynamic level. If you use Gann square and if you stick to a particular angle, right? Unless Nifty goes to 50,000 or very high levels or very low levels, right? मैं 10,000 पे चले गए तो levels change होगा. नहीं तो इस level पे let's say 20 से 25,000 and if to even up to 30,000, ये 60 points के आसपास ही होगा, right? So your profit is almost same. Your stop loss is also same. So you can mentally also you can just follow the same setup, right, every day. नहीं तो आप बैक टेस्ट कीजिए, आप पंचुली को भी बैक टेस्ट कीजिए, इसको भी बैक टेस्ट कीजिए, आप देखिए किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. एंड अनलेस यू बैक टेस्ट, यू गैदर द डेटा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट, फॉर यू टू योरसेल्फ हैव द कन्विक्शन, राइट? सो नाउ तो आपको यहाँ पे एग्जिट होना था, राइट, एज आई सेड. And if you really want to take a short, then आपको you have to wait for again this level to be breached, which happened here, right? Then there was a little retracement and then a follow through, right? So see, if you take a trade below this level, right,
you should set a stop loss of at least this swing high, right? I mean ये previous time cycle का जो high है इतना initially आपको रखना है, right? Because of these swings like this, if you keep the stop loss very very tight, then the likelihood of stop loss is likely to be hit, right? तो इधर या तो आपने इसका जो मिड पॉइंट है उसको चूज कीजिए, या अगर कोई साइकिल का हाई हाई है इमीडिएटली वहां पे भी रख सकते हैं, स्पेशली इन द बिगिनिंग। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट देके यहाँ पे चले गए, एनीवेज यू आर गोइंग टू बुक योर प्रॉफिट्स हियर एंड सी इफ यू ऑलरेडी बुक टू एंड यू गेट योर थर्ड वन हियर, आई वुड सजेस्ट एक प्रॉफिट लेके ही आप भाग जाइए, राइट? बिकॉज यू हैव नाउ gone from 2 targets to 3 targets in a day, which is more than enough, to be honest, right? In 3 targets, you have literally made 18,000 rupees, right? तो उससे ज़्यादा, if you expect, you are going to lose more than you earn, right? नहीं तो आपको very prompt होना पड़ेगा, and as soon as things are happening in the market, you will have to respond to that. But my suggestion is 2 targets रखिए, and your life will be peaceful, I feel, right? Especially when the market opens with such a big gap, right? You have to at least minimum wait 30 minutes to allow things to cool off, right? I would at least wait for at least 2 periods to allow things to cool off, right? I mean, just to let the volatility settle down after such a huge gap up. I mean, देखिए इसका प्राइस एक्शन कहाँ पे था, ये इतना नैरो रेंज पे था, उसके बाद इतना गैप अप। कहीं कहीं दिन क्या होता है, ये गैप अप के बाद ये गैप फिल करने आते हैं, राइट? सो बट देन दिस वाज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ रिवर्सल, जब यहाँ पे सपोर्ट मिला, राइट, along with this gap, and then it broke the high, this was your high probability trade, and आपको 2 टारगेट मिल गया, you should ideally take this trade and just exit, right? I mean, that is what मिडिल लाइन का फॉर्मूला क्या है? huh? मिडिल लाइन फॉर्मूला, Middle line is the based on the opening price. I mean, it's very simple. If you look at the opening price, what is opening price? 22,735. 22,735 का आप अगर स्क्वायर रूट लेंगे, वो आता है 150.78। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 150.78 को राउंड ऑफ करेंगे तो 151 आता है, उसको स्क्वायर कीजिए, कितना आता है? 22,801। सो दैट इज व्हाट यू सी हियर, 22,801। So essentially you take the opening price, you take the square root and find the nearest integer and take the square of that integer to get the, because integer levels ka squares are much more reliable, right? Rather than just taking blindly, whatever is your opening price. And that acts like a strong magnet, as you can see, right? Price just swung around this level, right? यहाँ पे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, right? So these prices tend to act like, especially if the market is sideways. So I can show you one more day also. Like, let's say if you take this day, right? So if you want to back test, how can you back test with this indicator? Let me show you that. So आपको opening price measure करना है 22,461। तो आपको आके सिर्फ ये इंडिकेटर में ये ओवरराइट करके वो वाला प्राइस सेट करना है, जिसका भी बैक टेस्ट कर रहा है उसका ओपनिंग प्राइस सेट करना है, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा ये पिवट सारा। C22,461 अगर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होता है 149.86, मतलब 150, और 150 का स्क्वायर हो गया 22,500। तो ये लेवल आपका हो गया 22,500, दैट इज योर रेफरेंस लाइन, and these are all 36 degree from the reference line. So this becomes your pivot line, right, for the day. So price ने कुछ भी नहीं किया है, and on this kind of days you can clearly avoid, that price is just jumping between these two levels, so clearly avoid, right? So that is how you should, don't trade in this kind of a market. Maximum what you can do is, if you feel that prices are bouncing off these lows, you can place a buy order, limit buy order when the price comes to this kind of level, right? That is what you can do, and then you mark the resistance zone. तो वहां पे अगर price आए, you can short for a quick scalping kind of trade, like double top and this यहाँ पे triple bottom बनाया, फिर जाके थोड़ा सा movement दिया,
but that too nothing. And this was an expiry day also, I think Thursday wala, I think yeah last day tha expiry ka. So sometimes on expiry day they just want to keep it tight, right? तो ऐसे आप बैक टेस्ट कीजिए. आई मीन यू जस्ट पिक द ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे. ओपनिंग क्या है? 22,475. तो आपको जाके सिर्फ ओपनिंग प्राइस लगाना है. 22,475. तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आ जाएगा ये लेवल. सेम ही लेवल आया है, same level. So on this day, price, first few candles you have to ignore and then see, where the price is. So यहाँ पे price action is not very clear, right? It's very choppy, right? So maybe once this low made and this thing happened and this breakdown happened, this is a clear, break of the low. यहाँ पे low बना है, उसका break हुआ, then a sharp turn and then breaks this. So this is a clear indication of a short. तो यहाँ पे आप short जा सकते थे. Again, you got your one target, you got your two target. Close your laptop and be happy if you want to be happy, right? If you want to trade, then you have to again wait and see what is happening. So again, there was a sharp bounce from here, right? And more often than not, what will happen is if you don't book your profits here, जितना भी आपका प्रॉफिट था यहाँ आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट. एंड द वे यू कैन बुक योर प्रॉफिट इज बाय प्लेसिंग a limit order. If you're trading in futures and cash, it is very easy because you can directly know the levels at which you want to place your limit order. आप अगर options में खेल रहे हैं तो then it is little difficult. You have to take help of your broker or sensible like platform. You have to know that अच्छा अगर spot यहाँ पे आता है तो options का price क्या होगा. But then there are so many other variables with options that you cannot accurately determine. तो आपको vigilant रहना पड़ेगा, right? You can set an alert here as soon as the spot hits this price. यहाँ पे रखिए options on your side, immediately hit an exit order, right? That is how you can trade. But वहाँ पे भी slippage हो सकता है because ऐसे candle देखें नहीं, 1 मिनट में एक level cover कर रहा है, right? So in this kind of volatile market, the only way you can trade is with limit orders, right? You can book your profits. That is why I tend to prefer futures, because in futures, I can exactly control where I want to place my orders and limits and etc. Right? So यहाँ पे, the second trade where I would have placed is, because I know that this is a runaway trade, I can't catch this trend. And then so either I could have shorted here or I could have waited till this thing happened and then I can go long here, right? And if you went long here, you got here. See, you can go long here or here. That is completely up to you. If you feel that, this is like, again, see the pattern आपको थोड़ा recognize करना पड़ेगा. This is again like a rounded bottom, right? And then, यहाँ पे थोड़ा price action आप देखेंगे, तो it is making, higher highs and higher lows. And यहाँ पे आपका actual breakout हुआ. Okay. And then you can either here or here, wherever. I mean, if you, हाँ, डेट कैसे बैक मिल रहा है? क्या डेट कैसे बैक मिल रहा है? डेट टेस्ट क्या करने के लिए डेट कैसे बैक मिल रहा है? आपका वॉइस सुनाई नहीं देता है मुझे. कॉस स्क्वायर ऑफ 9 का डेट बैक कैसे करें? बैक टेस्ट सेटिंग सेटिंग बताया ना, ये जस्ट सिर्फ आज आपको का डेट ओपनिंग प्राइस डालना है. इसमें जिस दिन का बैक टेस्ट कर रहा है उसका ओपनिंग प्राइस डाल दीजिए, वो लेवल उस हिसाब से सेट हो जाएगा. जिस दिन का टेस्ट कर रहे हैं उसका सिर्फ ओपनिंग प्राइस डालना है उस हिसाब से, और कुछ चेंज नहीं करना है. See, if you want और to सर taste with a एक बार आप different angle, इसको if you want to एक taste बार with, आप इसको उस पर फ्यूचर पे भी बता पाएंगे सर 15 मिनट्स में? हाँ सर एक बार आप फ्यूचर पे भी बता पाएंगे निफ्टी का फॉर 15 मिनट्स? 15 मिनट्स में तो आप स्विंग कर सकते हैं. आई थिंक इंट्राडे इन 15 मिनट्स स्विंग के लिए ही सर, स्विंग के लिए ही सर. हाँ तो सो दिस इज क्लियर, राइट? 1 मिनट का अभी क्लियर है, तो 15 मिनट्स में अभी देखना पड़ेगा कौन सा सेटिंग अच्छा रहेगा. आई थिंक 15 मिनट्स में ये सेटिंग थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा. सो लेट मी चेक व्हाट इज द 8 ईयर. ये आपको मिनिमम इसका डबल रखना पड़ेगा. सो
try 60 or 72 degrees. I think 72 degrees भी अच्छा रहेगा. So double कर दिया मैं basically. Okay, which is half of 144. और टाइम को भी आपको डबल ही रखना है, ठीक है. इफ यूर वट एवर यू कीप एज योर एंगल, आपका जो टाइम लाइन है उसको भी आप उस हिसाब से रखिए. एंड आपको सेट कर, एंड इफ यू आर डूइंग स्विंग, आइडियली यू शुड सेट इट टू सम सिग्निफिकेंट हाई एंड लो. तो आपको लो मेजर करना है या हाई मेजर करना है? तो यहाँ पे लो क्या है? यहाँ पे लो है 21964. तो यहाँ पे जाना है और डालना है 21964. ओके. If you're doing swing, then the levels will be set according to this low, right? तो आप कहाँ से Okay. शुरू करना चाहेंगे ट्रेडिंग? Let's say where are you? I mean, you can be anywhere, but the rules are same, right? Only the levels I have adjusted for your specific swing trading. तो minimum आपको I think 72 लेना है. You can also backtest with different settings, but yeah, my recommendation is to go with minimum 72. इसके ऊपर भी जा सकते, मतलब आप 90 डिग्रीज तक जा सकते. लेट्स से यू कैन आल्सो चेक विथ 90 डिग्रीज. दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, राइट. 90 डिग्रीज में जाएंगे आपको सारे कार्डिनल पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट, बिकॉज ऑल द 90 डिग्रीज आर लाइक कार्डिनल पॉइंट्स एंड यू विल गेट एवरीथिंग, राइट. लेट्स से इफ यू स्टार्टेड ट्रेडिंग, लेट्स से आपको रिवर्सल कैसे क्या करना है, राइट. तो मान लीजिए आपको फर्स्ट दिन तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू फॉर्म्ड ए लो, राइट. एंड देन आपको वेट करना है मिनिमम टू ब्रेक अबव द नेक्स्ट कार्डिनल पॉइंट विच इज दिस पॉइंट, राइट. तो यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट 1. एंड टारगेट 1 जब अचीव हो जाए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है. टारगेट 2 जब अचीव हो जाए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, राइट. टारगेट 3 जब अचीव हो जाए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है. So what I would suggest is, if you are doing swing, you do 1, 2, 3, right? First target, exit 50%. Second target, exit 25%. Third target, exit fully. Yeah, so 20, 50, 25, 25. If you follow that rule, and अगर वो 25 आपका stop loss ले जाए, लेने दीजिए, right? Anyways, you made 50% here, and 50. Sorry, you made one target on the 50%. You made 2 targets on the 25%. Remaining, let the market decide. Okay. And if you're trading with more than 3 lots, then you can continue. Like, after 3 targets, it really doesn't matter, because you would have made enough money to now take a risk. And your risk is, 1 level. That's it. Okay. Now, यहाँ पे, when price shows a consolidation, right? Meaning, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे double ties बैठा है, right? Then this range becomes your, what do you call the narrow, I mean, basically, क्या बोलते हैं, this is non-tradable zone, right? That becomes. And the only way you can trade this, you are allowed to trade this, is at the double bottom or double top में आप initiate कर सकते हैं. Basically, this is your buying area. तो यहाँ पे, let's say, once price comes back here and retraces, you're okay to take a long here, right? But you can't take a long here until you are out of this range. मतलब, like, this was an indication that it was out of the range, right? It broke above this area. Now, typically, this happens during the beginning of the day. So it is likely that you will not be able to catch the initial trend, right? But you can join the trade from here. And even if you did that, you got your 1 target, you got your second target, you got your third target. Typically, you should book everything on your third target. And if you have more than 3 lots, you can continue. And in this case, you would have gotten many targets. 5-6 targets आपको मिल गया होगा. But this is a rare kind of movement. आपको महीने में 1, 2 या 3 ही बार ऐसे कुछ मिलेगा. Most of the time, you will get this kind of volatile moves. So that is why I'm recommending that you play 1, 2, 1, 2, yeah, 1, 2, 3 maximum, right? In the beginning, you just play 1, 2. First target 50%, second target 50%, close. Don't trade for that day.
again initiate. You can come back tomorrow if you get an opportunity, do 1 2 1 2. Nifty So 5 that way, minute you know, होता है? you will slowly you will grow your capital, right? Without, you know, the fear of losing it. Yeah, tell me. Nifty 5 minute में क्या setting होती है? Nifty 5 minute 15 minutes से अच्छा 5 minute होता है Nifty. क्या हुआ? Nifty 15 minutes से अच्छा 5 minute होता है. उसमें setting का कुछ change करना है. सर वो आप कर लीजिए, राइट? आई मीन यू हैव ऑल द टूल्स विथ यू. आप कहीं पे भी जाइए, आप सेटिंग्स चेंज कीजिए. आई मीन 5 मिनट में आप 90 मिनट्स थोड़ा 90 डिग्री थोड़ा बड़ा हो जाएगा. 5 मिनट्स के लिए आप 45 डिग्री काफ़ी होता है, राइट? So for 1 minute you can use this thing 36 degrees, and you know, for 5 minutes use 45. 45 डिग्री यूज कर लीजिए 5 मिनट के लिए, वो काफी होगा आपके लिए. 45 डिग्री. तो अगर यू नो, अगेन इफ यू ट्रेडेड बाय दैट रूल, राइट, तो यहाँ पे सपोर्ट था अराउंड दिस 45 डिग्री. यहाँ पे जोन पे सपोर्ट आया है. देखिए ये जोन को टच करके गया है. So you could have initiated your long here and you will get one target. See, the reason I don't suggest 5 minutes is becomes too big for intraday traders, right? So if you use 36 degree, you could have gotten 2 targets easily, right? यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही target मिलेगा. That is the problem. So with this kind of volatility we are seeing, my recommendation is 36 degrees and 1 minute, right? That is the right way, you know, you can maximize your profits with this kind of volatility. आप अगर 45 डिग्री करेंगे कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी हैप्पी विथ वन टारगेट. वन टारगेट थोड़ा बड़ा मिलेगा. इट विल बी प्रॉब्ली अराउंड 75 पॉइंट्स. बट आपको 36 डिग्री में आपको 120 पॉइंट्स मिल रहा था, राइट? इन द सेकंड टारगेट. यहाँ पे देखिए सेकंड टारगेट के पास गया ही नहीं है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि यू नो what is the vibration of that particular stock, right? That is but prevalent at that time, and you have to adjust your thing accordingly, right? And just by looking at, you know, where the high and low is terminating and adjusting your angles, you can easily find. That is why I recommend, you know, don't trade in the first period, right? Just observe and find out, you know, what the stock or index is trying to do, and then you join the trade, right? Once your pattern and, you know, support resistance थोड़ा बहुत clear हो गया, कहाँ पे resistance लिया, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे perfectly 36 डिग्री पे ही resistance लेके आया है नीचे, right? Again it took the support exactly line पे नहीं आया, लेकिन zone पे touch किया, zone पे touch किया. So now I know, see यहाँ पे एक, you know, there is a big gap, and if you observe, there is an open low on Nifty that day, right? I think Nifty opened with a, or maybe it was very close to low. That means, you know, this gap is a big support. And जब second time यहाँ पे मुड़ा with a double bottom, then and this is an important Gann level, right? Anyways, this is the important level. यहाँ पे जब गया, मैं यहाँ पे जरूर long जाता. So this is my sure shot trade, this level, and I got my one. नहीं, अच्छा ये कहाँ पे 45 डिग्री पे है, सॉरी 36 डिग्री पे डालना है ना. So 36 degree is my preferred choice for Nifty in the current scenario, right? Yeah, so this is what I was saying. See, if you look at 36 degree, ये support resistance अच्छे से बैठ रहा है, right? यहाँ पे resistance हुआ, यहाँ पे support हुआ, यहाँ पे break हुआ resistance, मैं long गया, एक target, दो target, I'm out. So that way, you know, I can control my risk better, and you know, आजकल तो एक एक मिनट में बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है, राइट? तो आई थिंक इफ यू आर अ डे ट्रेडर यू शुड ट्राई प्रैक्टिसिंग, यू नो, ऑन द 1 मिनट. अदरवाइज आपको स्विंग करना है, आप 15 मिनट्स में जाइए एंड आप कीजिए. एंड उसके लिए आप 90 डिग्रीज भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उसके लिए आप बैंक 90 निफ्टी का डिग्री, कुछ है क्या? मिनिमम 72 डिग्रीज, और माय रिकमेंडेशन वुड बी 90 डिग्रीज, राइट, फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम. बैंक निफ्टी में 15 मिनट का कुछ सेटिंग है क्या? ये आपका 15 मिनट्स का सेटिंग है विथ योर व्हाट इज दैट 90 डिग्री सेटिंग्स. So see, this बैंक tool is निफ्टी there with you, right? And that is the purpose I have given this tool, so that you can play with it and find the right angles, right? If I have to tell you everything, then you know there is no purpose of taking this class also, no? So you know, then that means you are not learning anything. And that is the whole point of you having to spend time with your chart and finding the perfect angle. And अब जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको
ये सब पैटर्न्स विजिबल नहीं होंगे, राइट? तो you have to understand, how the stock is vibrating, right? Which levels are, sort of matching the frequency of the vibration. कहाँ पे support resistance ज़्यादा बन रहा है, right? So here you can see, right, with this 90 degree, you can clearly see कितने बार यहाँ पे support ले रहा है. That means this is a good level, right? And breakouts जब मिल रहा है, clean breakouts मिल रहा है, and आपको वो हो रहा है. तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 3 बार वो किया, फिर ब्रेकडाउन किया है, राइट? ऑब्वियसली यू कैनॉट ट्रेड दिस कैंडल, राइट? यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ पे, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ पे जब ब्रेक हुआ, दिस वाज योर परफेक्ट कैंडल टू गो शॉर्ट. और यहाँ पे भी आप शॉर्ट हो सकते थे, नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज एनीवेज यू गॉट योर सिग्नल फॉर ब्रेकडाउन केम हियर ओनली. तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हो रहा है एंड देन दिस थिंग हैपेंड, यहाँ पे भी आप शॉर्ट हो सकते थे. इफ यू मिस दैट, यू कुड हैव जॉइंड इट हियर. So even if you joined here, you made a killing. You made a killing. You could have joined here and here. I mean, you had so many opportunities, right, to join this trend. If you are only following it, right? The signals are very, very clear, right? यहाँ पे देखिए एक pivot break हुआ. Then यहाँ पे consolidation के बाद यहाँ पे एक pivot break हुआ. 2 pivot break हुआ, right? Now, even with this, if you're not making money, then I don't know what tools in the world will help you make money, right? So, you could have easily positioned yourself for this move. I mean, of course, you don't know that you will get this much move, right? That is not possible. Right? Similarly, when this day happened, right? Again, this was the range, right? यहाँ से यहाँ तक range बना लिया था. So there was 2 ways you could have traded this, right? Either you trade at the support, when price जब support पे आया तब buy कीजिए, right? Somewhere here you could have bought, or you trade the breakout. अगर breakout भी trade करता तो you should have, at the end of the day, you should have gone long here. यहाँ पे आपका सिग्नल आया था. अगर आप लॉन्ग जाते तो आप ये पूरा obviously when you get 2 levels, you should definitely exit some here, right? यहाँ पे आपको exit होना था. फिर से नीचे आया, and then and then when the double support happens, this is when again I would have gone long here again, and this is my critical level, by the way. तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, then I can go short again. This level, mark this level, 23,350, नहीं sorry, 22,350, right? Anyways, it did not go. So if you initiated your long head, again you got 1 to 3 targets, right? Again आपको यहाँ पे support मिला है. तो again I would go long here with a stop loss of this level, or maybe this level, maybe even this level is also fine. एक level इतना आपने profit लिया है, एक level तो आप दे ही सकते हैं. तो अभी आपका support यहाँ पे, मतलब stop loss level, if you're long here, it is here 22,650 में. But लगता है कल भी ऊपर ही खुलेगा, right? Because I don't know, depends on Trump and his policies. बट यहाँ पे देखो, आप अपने अगर यहाँ पे लॉन्ग गया है, और इफ यू हैव नॉट गॉन लॉन्ग, यू कैन गो लॉन्ग अबव दिस आल्सो, ब्रेकआउट ये 950 के ऊपर, या इन दिस जोन 950 से 23,000 के आसपास, यहाँ पे आप जा सकते हैं लॉन्ग ऑन ए 15-minute कैंडल. सो दैट इज हाउ इट इज. द ट्रेडिंग रूल्स आर सिंपल. मैंने एक पीडीएफ भी डाला था which explained all the trading rules, right? So बैंक निफ्टी का कुछ दिखा रहा बैंक निफ्टी सब में अप्लाई कर सकते हैं. This बैंक is, निफ्टी कॉल करके see, you have to play with your chart, right? I cannot spoon food you. That is the problem, right? I'm seeing, because if you cannot play with your charts and understand, the frequency of vibration, then you will not be able to master Gann, unfortunately, right? तो आपको टाइम बिताना है आपके चार्ट के साथ, एंड आपको ही ढूंढ के लाना है, राइट? एंड 90 डिग्री, सो वॉट एवर यू यूज फॉर निफ्टी, यू जस्ट सिंपली डबल इट फॉर बैंक निफ्टी. अगर निफ्टी में 90 डिग्री में स्विंग कर रहा है, इसको डबल करना है. आप सेंसेक्स में 4 गुना कर दीजिए, right? Minimum 3 times you have to use, right? So because the price is 3 times the nifty, and bank nifty is 2 times, right? तो बैंक निफ्टी में अगर आपको स्विंग करना है 15 मिनट्स में, यू हैव टू यूज 180 डिग्री कार्डिनल्स, तो आपको स्मूथ होगा. नहीं तो वो आपका स्टॉप लॉस बहुत हिट होगा, एंड इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू. उससे भी बैंक निफ्टी अवॉइड करना ही बेहतर है, बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, राइट? आई मीन इट इज वेरी वोलेटाइल ऑप्शन में इंस्ट्रूमेंट. बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा समझ में आया
So you have to, options के लिए अगर अलग strategy use होता है, right? These things don't work typically. Options का अलग सा numbers होता है, options का individually, there is actually I will start an options master course, soon, because it is too much material to cover, right? And there is a lot of new concepts that has to be taught. So that गन will बेस be होगा, huh? अमेरिकन बेस होगा ना, वो ग्रीक बेस? No, there will सर be ऑप्शन, another course, another master course, right? On ऑप्शन कोर्स specifically on गन options. बेस, ग्रीक बेस? Gann base, हाँ Gann भी रहेगा, I will also specify some other indicators जो आपको मिलेगा, for options trading. I अल्फा have गामा बीटा वो developed, सब क्या? there is a monthly range volatility calculator and the confirmed breakout. ये सब मिलेगा आपको, and then there is, I'm also compiling this. It's not yet compiled. So there are different numbers, right, at play for options, right? So because options moves in a very specific range, right? तो उसका numbers अलग होता है. तो उसके लिए it requires a different level of study altogether, right? तो बैंक निफ्टी, I don't trade much, so I don't know. इससे तो सेंसेक्स अच्छा है शायद, right? I mean, बैंक की बहुत वोलेटिलिटी अच्छा रहता है, तो समझ में आया तो बहुत अच्छा बट है। देखिए ना, वोलेटिलिटी आपका स्टॉप लॉस कितने बार हिट होगा, and if can you keep this much stop loss? ऑप्शन में अगर समझ में आया तो। आपको मिनिमम 500 पॉइंट 600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी में. और फ्यूचर नहीं, ऑप्शन, ऑप्शन में अच्छा परफॉर्म है। ऑप्शंस में अभी ये कोर्स में आई विल नॉट गो डीप इनटू ऑप्शंस, दैट विल बी अ सेपरेट कोर्स. ये कोर्स खत्म हो जाए तो एक ऑप्शंस तो इंट्रोडक्शन दे देना मैंने हम लोग को। आपको एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दे दिया है, राइट? गैन प्रेशर डेट, दैट इज द बेस्ट गैन स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शंस, राइट? तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए. हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, ये क्लास खत्म होने के बाद हम लोग का जो स्टूडेंट ओनली है उसका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑप्शन क्लास का, क्या है क्या? नहीं है, क्या सिलेबस है। एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर, ऑप्शन क्लास में क्या कवर है क्या आपका नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी, आई मीन आई कांट हियर एनीथिंग. ये क्लास कंप्लीट होने के बाद ऑप्शन का एक हम लोग का इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि सिलेबस क्या है, क्या कवर है नहीं है इसमें। हाँ हाँ, एक एक आई विल पब्लिश फॉर एवरीबडी, आई मीन. एक स्टूडेंट के लिए अलग से कुछ कर दीजिएगा ना। वो देखेंगे, आई मीन वो उसका, आई मीन देयर विल बी ए सब, आई विल सी व्हाट कैन बी डन. एक स्टूडेंट ओनली एक अलग से कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा तो समझ में आएगा ठीक से। इंट्रोडक्शन से क्या होगा? आई मीन इट विल रिक्वायर हाँ, एटलीस्ट 7-8 क्लासेस फॉर मी टू कवर द ना ना, मटेरियल. मैं इंट्रोडक्शन खाली बोल रहा हूँ कि क्या है नहीं है, क्या कवर होगा उसमें, क्या See, रहेगा नहीं रहेगा, for प्रोस you, एंड I have कॉन्स ये already सब। given the, master strategy for options, right? Which is Gann pressure date. आपको सिर्फ 50 दिन ट्रेड करना है in the year. You have the indicator also. I have explained the rules. Now, if you're not able to do anything with, then what can I do? That strategy itself is more than enough if you're an options trader. Baki, you can just do, normal options trading using, whatever I taught you, right? Either Gann Pancholi levels या Gann square of 9 levels. तो इससे अलग और क्या सिखा सकते हैं, right? In options. That is the basics, no? And, go to Zerodha or any other, university, right? There are a lot of options courses that are available, for basics. But what I'm going to teach you is not going to require any of those things. It is just a play of numbers, and there are some special numbers, and that will require a special course, right? That is not part of, this course. This course was mostly to explain all my indicators and the strategies around it, which I think I have done. And I also wanted to give these 3 classes, for you to clarify doubts. But क्वेश्चंस ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या क्लियर करूं, राइट? आई मीन देयर इज नो होमवर्क डन, तो आई कैनॉट डू मच अनलेस यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, राइट? तो इट इज completely up to you. You have 2 more classes, so if you can watch the videos and come back with questions, um,
You know, if you want, I can skip one class and do it, you know, every 2 weeks or something, right? Maybe last class May 28th ko lunga, and then maybe one I can do, you know, mid-May, just to give you time. But otherwise, you know, theory content to सब एक ही है, right? Now you have to backtest on your particular stock and come back, right? With observations, with questions, जो मुझे नहीं मिल रहा है. So how can I help? Strategy, though, I am not going to invent new, right? At least this course, these are the specific strategies I've already covered. There is, if I cover more, you know, it will only become more confusing. So I would suggest, you know, you have enough material, you have enough power in your hands. तो आप जाके एक दो पिक कीजिए, choose your time frame, you know, choose one strategy, one time frame and one stock, and उसको जाके back test कीजिए. Start with one, right? And then, you know, you can slowly go from there. And आपको videos watch करके you make notes in your diary, right? So that even if the videos are not there, the notes are there with you. And use those 2 classes that I have to clarify any doubts on the rules. So you have to do a little bit of hard work. No, everything can't be, you know, fade in your mouth, right? I mean, I can only do so much to do the spoon feeding, right? आप अगर कुछ काम नहीं करेंगे in the background, how can how can you get the output? You tell me. यस, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, right? I mean, you know, जो and, क्लास हो गया उसको 2-3 बार देख के मैं थोड़ा नोट बना लूंगा, हाँ, क्वेश्चन तो आप नोट्स बनाइए ना. आप क्वेश्चन वीडियोस नहीं देखते आएगा देखते, तभी. whenever you are watching the videos, you make notes. And कहीं पे भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो वो पूछिए. Or better way, I told you, right? You know, you open your chart, you record a 2-minute video and send it to me. That way you don't have to wait for, you know, me to come to the class and explain, right? I mean, if you send me the video with a proper question, I can respond immediately. I haven't received any questions at all, unfortunately, right? I mean, that is the sad part. And I'm seeing that, you know, people don't even care attending, right? I mean, after that. So my job is done, right? Now it's completely up to you. 2-3 क्लास में आप आज तो हो गया एक क्लास, and then you have 2 more remaining, right? Maybe I will skip the next week's class just for you to, you know, catch up on, you know, some of these recordings. तो आप जाके देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, use these 2 weeks, and then after 2 weeks when I, you know, have the class maybe on 28th, at least come back with proper questions, no, at that time. Or if you don't want to wait, record a 2-minute video, right? Ideally, you know, जैसे मैं record कर रहा हूँ, right? You just open your Zoom and record a 2-minute video, right? कितना difficult है? Not difficult, right? In my view. तो आप कीजिए and share it with me. I'll be able to respond, you know, faster. आप सर अगर लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, then you know, if it's a generic question, right, it's very difficult because see, I can't observe the whole universe of stock market, right? I mean, very difficult. I'm a one-man army here, and I also have to do my trading. I prepare course, I build indicators, right? I have to do customer support. You know, I'm doing marketing. You know, people come up with queries, right? I do one-to-one calls. So my days are also, you know, filled, right? So the best way you can get my help is ask a meaningful questions in a meaningful way, and I've also already described, you know, what is the way to ask question, right? Just a 2-minute video, you know, showing your screen. इसमें annotation डाल दीजिए, you know, क्या exactly question है. आप वो video देखते ही मुझे पता चल जाएगा exactly what you're trying to ask. I'll be able to respond, you know, immediately. सर Or वो at least, ऑप्शन का जो दिया था ना, वो मारुति huh? सुजुकी वाला, Which one? Gann pressure date. तो मारुति सुजुकी बोला था ना, मारुति सुजुकी में बढ़िया काम करता है. तो इसका और कुछ ही नहीं है, इसका दूसरा कोई स्टॉक नहीं. मैंने समझ में नहीं आ रहा है वो आपका ऑप्शन वॉइस. का ऑप्शन का एक दिया था ना, मारुति सुजुकी में बढ़िया काम करता है. ऑप्शन का एक इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर? तो ऑप्शन का कुछ था. पता नहीं आप कौन सा इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं. Which one? This one? Volatility? No, ये तो नया indicators है. You know, this is not part of your package, no? Right now. These are new indicators I've done.
volatility range and all that. This is just I've done like, literally, 2 days back. This simply calculates, the volatility range of your options. It takes the last month's closing price, uses the VIX formula, and computes, what is the expected high, high and low of range, right? So if you look at it, Bank Nifty fell to that low and now it has recovered, almost going towards the pivot. So above this, definitely it can go towards this level, right? Or if it goes to this and then bounces back, then this is so this is a good indicator, especially for option sellers, because and there are some strategies. We see options is a very deep subject, right? It is very difficult to cover all the theories in one class, right? So I don't want to start something that I cannot finish. I will have a dedicated course on options जहाँ पे हम detail में जा सकते हैं, right? And all of these will be included. You will also get these indicators as part of that course. So and these were not there, right, when I started this course. These are new things that I have learned and developed over the last few weeks. So I will come up with the right course material. वो तैयार हो रहा है. So once it is ready, I will be able to discuss. These are all little tools that are there, right, for your options trading. So the way to do it is identify good levels of supports and resistances from where you can. So basically you would be able to sell these options, right, when you approach this level. You should observe the price action very carefully. अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो आप पुट ऑप्शन बेच सकते हैं. अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है then you can sell the call option, right? So that depends on when you reach this level, उसका प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा. तो ये अलग सब्जेक्ट है, नथिंग टू डू विथ whatever indicators I gave you and the knowledge around it. तो ये तो नया कॉन्सेप्ट है, right? I don't want to introduce anything new right now. And और एक है indicator called confirmed breakout, जो कि basically it allows you to trade a breakout as the name suggests, right? So आपको एक high and low mark करना है. So let's say this is the low, and you can either take this high or this high. This is the nearest range, right, that you can trade. So what it is saying is, so given that this is the high and this is the low, where can the breakout be confirmed? And then if you turn on the volatility range also, so basically it is saying that your breakout will only be confirmed here. So technically, there are two ways to trade this, right? Either price will come here and start reversing, in which case you can go short, or if the price sustains here and tries to go up, then you can go long. And then you can combine that with your other pivots and all that. This is kind of the midpoint also between these two levels, if you see, right? So this level will act as an important barrier to decide whether Bank Nifty will keep going up or down, right? तो ऐसे ही है. So these are new indicators. I don't want to kind of confuse you guys. I know that you are already very confused with all the knowledge. I feel that you have enough indicators in your hands right now. आप जाके back test कीजिए, and one of the simplest indicator that you are not using and realizing the power is this one, जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ जाके back test करना था, right? I'm saying if you are confused, you start with this one. This is a solid indicator, and यहाँ पे आप 15 minute use कीजिए, 25 minute use कीजिए, everything is good, right? Even 15 minute is good, right? तो आपको सिर्फ जाके टेस्ट and this you can use on anything, Nifty, Bank Nifty, because it is based on the natural vibration of that stock, and these levels are designed accordingly. It is perfectly designed according to the vibration of that stock, and I think I explained this. वो video जाके फिर से देखिए, right? It takes all the vibrations of these periods, determines the average, उसको project करके ये levels determine किया है, and these are all cardinal points. Everything is done for you, right? Even the midpoints, the quarter points in time cycles are also done for you.
this is the simplest indicator that you can use to trade, right? And just simply make money. At least back test तो complete कीजिए इसका. And this is the easiest one to back test. आपको सिर्फ जाके ये करना है, ये enable करना है और इसको सिर्फ drag करना है. ये पॉइंटर्स को सिर्फ ड्रैग करना है. आप इतना नहीं, अगर नहीं कर सकते तो बताइए और क्या कर सकते हैं, राइट? बैक टेस्टिंग इज ऑल्सो सो इजी. आपको सिर्फ जाके इसमें प्लेस करना है कहीं पे भी इन दिस एरिया. And your starting point is this blue region because this is the start of a distinct sun cycle period, right? As you can see, each of these is, is based on the sun cycle. तो ये तो आपको मतलब perfectly डिजाइन करके दिया हूं ना मैं. And ideal points of trade is, after it passes this cycle. So here was an ideal period. Here is an ideal period just after the green line. Again, just after this red line, this is the ideal period to initiate your trade. Again, after this green line is the ideal period. Now, when you combine this time and, you look at the levels, kahan pe support resistance ban raha hai pattern, right? Combine time, price and pattern. Double button ban raha hai at a very important time level, right? So, if you're an aggressive trader, you can initiate your long here with a small stop loss. अगर नीचे आया तो यहाँ से हम रिवर्स हो जाएंगे, नहीं तो हम लॉन्ग जाएंगे. If you're a conservative trader, wait for the breach of this next support, resistance. यहाँ पे आप लॉन्ग हो जाइए. एक टारगेट आपको मिला है, राइट? तो ऐसे ट्रेड करना है, राइट? तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करते? तो this is your reference, right? And you know that the price is coming down. यहाँ पे consolidation हुआ है. मतलब simple है, either it has to break out above this or break down below this. Those are your two levels. Then you know that nothing happened in this period, so you wait for this period to complete. As soon as this period completes, you got a breakdown. तो आपको यहाँ पे शॉर्ट होना था. आपको एक दो ऑलमोस्ट 3 लेवल मिल गया. एंड आपको अगर 3 लेवल मिल गया है कोई ट्रेड में ऑन दिस इंडिकेटर, आपको सिंपली प्रॉफिट बुक करके भागना है. Again, 50% here, 25% here, 25% here, right? Like that if you do, or even if you miss it, okay, it touch नहीं किया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एग्जिट होना था. बस सिंपल है. And here again, if you come, because here it's a range bound, right? तो आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे भी नहीं गया तो your long was above this, your short was below this. तो यहाँ पे टाइम साइकिल कंप्लीट हुआ, the 1/4, this is the 75% zone. तो यहाँ पे आपको क्लियरली सपोर्ट दिख रहा है एंड दिस इज ऑल्सो पैटर्न, राइट? यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है. परफेक्ट टाइम. तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू इनिशिएट योर लॉन्ग. और इफ यू डोंट वांट टू, वेट फॉर ए ब्रेक अबव दिस एंड देन यू गॉट योर 1 पॉइंट. तो आपको अगर देखा जाए इस पीरियड में आपको एक दो टारगेट्स तो यहाँ पे इजीली मिला है. मान लो ये स्टॉप लॉस हो गया तो मैं 2 ही टारगेट्स मान रहा हूँ. यहाँ पे आपको इजीली एक टारगेट मिला है. तो एक साइकिल में आपको अगर 3 टारगेट मिल गया, मान लो आपको प्रॉफिट अचीव हो गया. एंड यू नो हाउ मच इज 1 टारगेट? एंड दिस इज बैंक निफ्टी, राइट? अब जाके टेस्ट कीजिए. जस्ट यूज दिस इंडिकेटर. व्हाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ? I have simplified so much for you. This is almost 1,000 points. तो आपको एक साइकिल में अगर 3,000 पॉइंट्स मिल गया बैंक निफ्टी में, और क्या चाहिए? See, bank nifty I will not recommend anything else, but this one I will recommend because this is naturally tuned to the vibration of that stock for that specific period. It is very, very scientifically designed as per Gann principles. This is the only thing I can recommend for anything. Commodity, stock, options I have not tested, right? But you can test on options and tell me how it is working. But see, options trading is not like you will plot the indicator on the options, right? You will plot it on the spot. You will take the trade on the options. That is how people do it. Normally, all analysis is done on the spot, not on the options chart. Options chart में जो होता है वो अलग game है. That I will explain later. So, use options just as an instrument to enter and exit based on the signals on the spot chart. That is how you should use options for now. And use the Gann pressure date strategy. That is also based on your spot only. 5-minute closing पे आपको trade लेना है. That's it. When there is a gap up, gap down. That is वो तो और भी simple है. जहाँ पर भी है 5-minute close में आपको trade लेना है, entry लेना है, depending on gap up or gap down. That is a different strategy altogether.
तो ये दो ट्राई कीजिए, और you know, if you want, if you're feeling that, you know, these Gann squares are not helping you, then don't use it. If you feel Pancholi is too complicated, don't use it. This is one thing, you know, you can use for, and this is not for day traders, by the way. This is for swing traders, right? So जिसके पास time कम है, you know, I think Sumit ji already used it, no? Sumit, are you using it or you're not using it? No, sir. आपने बैक Earlier I टेस्ट was किया है using कि it. नहीं Now किया है? from last few days I'm not trading, sir. No, no, you are not trading. But why are you? See, the thing is, if you are not going to put a time on your calendar, कि 1 घंटा मुझे बैक टेस्ट करना है जो भी है, right? You plan your calendar with 1 hour allocated to back test, or maybe 1 hour allocated to watching the video and 1 hour for back test, right? If you are not ready to spend that 2 hours for the next 5 days, you know, minimum 10 hours, right? 10 to 20 hours in the next couple of weeks, how are you going to benefit, right? Tell me. No matter what I tell you, and you know, you watch the video, it is not going to help unless you do the back test. And I made the No, back sir, testing actually I also was super busy easy for somewhere. you, no? So, Huh? sir, actually I was busy somewhere. So maybe now before the next class I'll finish up everything. हाँ, तो आपको थोड़ा back test करना होगा, and only then you will be able to, you know, do it. Ideally आपने थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाके प्रैक्टिस कीजिए, राइट? 125 minutes इज आइडियल, आई थिंक, फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी. इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाने का जरूरत भी नहीं है. आप सिर्फ 2 घंटे में जाके प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज मोर देन एनफ. तो आपको पता चल जाएगा, राइट? आई मीन एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, यू नो, 2 घंटे में टेस्ट कीजिए. दैट्स एनफ. Because that way, you know, your amount of time you have to spend on the screen is also lower, right? If you backtest on 2 hour time frame. This is what I originally recommended, right? Even in the PDF. आप 2 घंटे में जाके टेस्ट कीजिए. So this tool is so easy, it's super refined, and super useful, I feel, right? It takes everything of that Gann had to say, it takes care of it, right? It is looking at, you know, kitna, because Gann always based his theories on highs and lows, right? And the swing range. And this is taking the average of that, and it is even plotting the actual time जहाँ पे आपका movement मिल सकता है, right? And these are all plotted for you, both in the backward and forward direction, right? तो इससे easy and, you know, I don't know, indicator अगर कोई हो सकते हैं आप दिखाइए मुझे, but I have not found anything that is easier than this to use, right? अब अगर इसको भी, like let's say this current period, right, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो यहाँ पे तो पूरा रेंज बाउंड था, राइट? यहाँ पे रेंज बाउंड था, आपको ट्रेड मिलना मुश्किल था यहाँ पे. यहाँ पे अगर, यू नो, दिस वाज योर शॉर्ट कंडीशन एंड विद स्टॉप लॉस, यू नो, 1 level अप, तो यहाँ पे अगर गया, थोड़ा ये हुआ, बट यू गॉट योर प्रॉफिट हियर. एंड देन यहाँ पे फिर से आप लॉन्ग हो गया इस लेवल से, एंड यू आर स्टिल लॉन्ग. योर स्टॉप लॉस इज हियर राइट नाउ. इतना ही है इजी. निफ्टी में देखिए. हाँ, तो निफ्टी में, you know, initially there was a spike up, but then, you know, a reversal. So, you know, ideally, you know, I would have considered this top and this top as a double and a rejection. So this was for aggressive traders. यहीं पे आप short हो सकते थे. If you're a conservative player, you would have shorted here. And you have a choice, right? Initially आप stop loss यहाँ पे रख सकते हैं या mid point पे रख सकते हैं, right? That is completely up to you. Maybe for 1 or 2 candles you keep there, and once you see price dives in, then you can bring it to the last pivot. And price once it, you know, यहाँ पे अगर फटाक से यहाँ पे चलेगा, राइट, इतना जंप करके, तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे इनिशिएट किया होता, तो 1 2 3 आपको बन गया प्रॉफिट, पूरा जो मतलब पीरियड का जो प्रॉफिट है एक ट्रेड में आपका बन गया एक दिन में. And you had all the indications, no? This indicator was telling you to go short. And you can say, oh no, no, time period khatam nahi hua tha. So even then here,
here you could have gone short. At this 1 point below, आप stop loss लगा के रख सकते थे, right? Stop loss order. Even on this candle, you could have gone short on that day. Whether you gone short here or here, same. You know, this level पे आप short होता है तो आपको अगर 3 यहाँ पे आता है, आपको compulsory profit book करना था. And अगर नहीं कर पाए, यहाँ पे book करना था. And reverse करना था trade को. तो यहाँ पे आप फिर से long हो गए. And you know, now the long has also been confirmed, right? Because now this level becomes your critical level. 22 whatever 720. अगर यहाँ से फिर से नीचे आए, then you can consider shorting. Otherwise you keep riding long. यहाँ पे एक important level होगा 23,165. You know, maybe it is possible that, you know, the next day itself it can open here and then, you know, try and fill this gap. But as long as this low is protected, this day का जो low है, you are still long. In fact, you know, if it comes and makes a double bottom here and then reverse, you can again initiate your long here. See, you have to combine time, price and pattern, right? तीन चीजों आप अगर combine कर पाएंगे, then only you can do high quality trades. If you're not able to combine pattern, at least combine time and price, right? So your next way to initiate a trade would be somewhere around here, just after this. एक candle छोड़ दीजिए, maybe around 11:20 on 16th of April. आपको आके ऑब्जर्व करना है ऑन दिस क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल प्राइस क्या कर रहा है, बिकॉज दिस इज आफ्टर द मिड पॉइंट. यू आर एक्चुअली एट ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टाइम. वो भी आपको इंडिकेटर दे रहा है. सो यू कैन प्ले फ्रॉम हियर टू हियर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मे बी वन टारगेट यू कैन प्ले इजिली. एंड देन फिर से आपको यहाँ पे एसेस करना है. जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा एंड कहीं गैन लेवल के पास आ जाएगा, फिर यहाँ पे एसेस करना है, राइट? तो अभी से तो बता नहीं सकते प्राइस क्या करेगा, बट व्हेन इट कम्स यू हैव टू असेस एंड देन टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली. यू हैव सम डिफाइंड पॉइंट्स ऑफ इनिशिएटिंग योर ट्रेड. यूज दैट. So, you know, the only way you can get these things into your brain is by putting, you know, spending time with your charts with, you know, these indicators. Pick 1, 2 or 3 at most and backtest. Unless you backtest, nothing will sink in. That is the unfortunate part, right, of this thing. You know, this is the easiest, you know, indicator that even a child can trade, right, if I teach him the rules. यहाँ पे तो आपको कुछ settings भी नहीं करना है, except, you know, just to choose this box. That's it. And sometimes, you know, if the levels are too big, आपको यहाँ पे आके extension करना है above 1 or below 1, right? Sometimes you will see that, you know, वो movement has crossed beyond this one and beyond this one. तो जाके आपको सिर्फ extensions enable करना है, जो कि default बंद है, none है. तो आपको अगर ऊपर की तरफ करना है तो above 1 करेंगे, अगर नीचे की तरफ extend करना है तो below 1 करेंगे. That's it. और कुछ भी change नहीं करना है. It's सब cosmetic है. If you want to turn off certain things, you can. अगर आपको ये, but my suggestion is not required. Right? Just go with the default and use this mode for backtesting. अगर backtesting नहीं कर रहा है तो you just keep it off. It will automatically draw the levels for the current period. That's it. तो आप अगर 2-3 महीने का backtest कर लेंगे और एक महीने का forward test कर लेंगे, right? Then you will be set for life. But to commit that to memory, it is, you know, you have to put your pen on paper and actually note down this, you know, trades that you are taking, right, as per the rules. तभी आपको पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, right? Otherwise, so I will keep on talking and you will keep on listening and nothing will go inside. That is the thing that I am seeing. Now, I don't know how I can solve that problem for you. Because I cannot trade for you, no? तो आप देखिए, आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने चार्ट्स के साथ, अपने इंडिकेटर्स के साथ. You have a lot of powerful tools in your hand. तो आप थोड़ा देखिए उसको, मतलब if you can't master everything, just master 2 or 3 things, right? In the next 2-3 weeks. एक हफ्ते में एक करके कीजिए ना, तो that is enough for you. सर आज जो पहले दिया है गैन स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री करके कार्डिनल लेवल, उसके साथ पंचुअली पंच करके चल सकते हैं गैन नहीं, पंचुअली. don't do that. If you are using Pancholi, use Pancholi. Because Pancholi is a dynamic, is a system of its own, right? Don't combine Pancholi with anything else. Because if you put so many levels on the screen, you will get confused. Okay. So if you're using square of 9, use square of 9.
इफ यूर यूजिंग सी पंचोली में भी आप अगर बैक टेस्ट नहीं करेंगे वो आप पकड़ नहीं पाएंगे पंचोली को, because you have to understand, you know, on what days punctually gives good results, on what days it doesn't give good results, right? So that you will only be able to understand on back testing. ठीक है, because punctually levels are very very dynamic. It will adjust, you know, according to the movement of that stock yesterday. उसका हाई एंड लो के ऊपर ही डिपेंडेंट है सब कुछ. And but then Gann square of 9 is more or less you can say static. In terms of the level का जो distance है वो more or less remain static if you choose the same angle. If you choose 36 degree you will get the same levels more or less every day. If you choose 45 degree you will get the same levels more or less every day. And the settings will only depend on your time frame. You know, for 1 minute, like I said, you know, 36 degrees is good enough. For 5 minutes, maybe you can try, you know, 45 degree. If you're doing 15, then try 90 degrees, like that. Right? So you have to and you will yourself be able to find these degrees if you play around with your chart and your time frame. आपको जाके थोड़ा देखना पड़ेगा प्राइस ने क्या किया है, how many times it is hitting stop. If you feel that, you know, it is often hitting stop loss, then you will know that this is not the right level, because ideally you should choose a level where the stop loss doesn't get hit often, right? And that is how you will be able to choose, right? And I already told you how to do that. You have to look at the ATR, and your level distance should be more than the ATR. So this indicator is a fantastic one, right? Square of 9 is very versatile. You can use it anywhere, right? You just have to adjust the angles. Time cycle भी है, right? यहाँ पे तो time cycle भी included है, right? In one indicator. So you don't need, this indicator is sufficient on its own. It includes time, it includes price, and it includes, you know, everything, right? जो average range है वो भी included है. So this is one of the most versatile indicator that I have built. In fact, this is probably the most complex indicator I have built, and it has taken me the most effort to build this. And it is also the most complex. Every time if I have to change even a one line, it is very very tedious job. I am not going to touch this indicator at all. जितना भी है इतना काफी है. It took me a long time to build this indicator. If you are not able to understand the value, then I cannot help. Because this is Gann's principle at work, right? And if you're not able to grasp this, then I think, you know, you'll have to spend more time, read some more books, and then come back. Maybe, you know, you have an option to continue the education, you know, you'll have to, you know, enroll again for a monthly subscription fee. That and all I'll tell you towards the end of the course. But, you know, if you're not able to use my time effectively, then how can I help you? फ्री वर्जन के लिए 2 आवर चलेगा 125 मिनट की जगह फ्री वर्जन है तो 125 मिनट की जगह 2 आवर चलेगा समझ में नहीं आया. आप 125 यू यूज 125 मिनट ना हाँ, तो इस for those इंडिकेटर for के those लिए, have you know, this is a swing trading strategy, for right? those And who have free version 2 hour is okay हाँ for those who have हाँ, 2 घंटा trading यूज with 2 hours कीजिए, 2 घंटा यूज कीजिए ना. 125 के नीचे तो 2 घंटा आता है, नहीं तो 1 आवर यूज कीजिए. फ्री वर्जन में एक 2 आवर है 1 हाँ, आवर तो 2 आवर यूज कीजिए, 2 आवर यूज कीजिए. 2 आवर में क्या होता है, वो लास्ट वाला जो कैंडल वो छोटा हो जाता है, दैट्स इट. तो लास्ट वाला कैंडल में कोई ट्रेड मत लेना है. यू शुड इग्नोर द थ्री, वो 3:15 से जो कैंडल बनता है ना 15 मिनट्स का, वो वाला आपको इग्नोर करना है. ओके ये जो कैंडल है ना 3:15 वाला, वो तो 15 मिनट्स का कैंडल है, उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना है. So that is why, you know, 125 minute roughly divides it into 3 candles in the day. So that is why, you know, I recommend. But 2 hours is fine. अगर 2 घंटे में भी जाता है तो आपको ट्रेड यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर यहाँ पे नहीं बना है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, राइट? ऑन दिस, यहाँ पे शॉर्ट क्लियरली दिया है आपको.
and यहाँ पे first candle obviously you will not be able to do. So even if you missed it, you could have joined here. यहाँ पे clearly आपको दिया है on this day long signal, and this is your at least immediate stop loss. Actually यहाँ पे stop loss नहीं होगा, आपका stop loss यहाँ पे होगा, right? Or at least the half of this, right? You can't put a stop loss. आप रख सकते हैं tight stop loss because this was an important candle with a gap. तो अगर reversal होगा तो it may reverse the whole thing. At least ये gap तो close होगा. तो अभी you are in the long, the bullish में है अभी structure as per this indicator. But अभी आपको wait करना है till you come to this point. Anyways 15th आपको observe करना है क्या हो रहा है. तो 16th को आप trade ले सकते हैं on this candle. Because 15th anyways you are coming after a long break, right? 3-4 दिन का छुट्टी था, तो market में give the market time to settle down for a day. तो आप जाके मिड डे ऑफ 16th को आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. अगर after this you see that it has again reversed, then this is your condition to reverse. Or if you feel that price has taken support and you want to initiate it, so this is your right level to either initiate a long or short depending on the price action around this area. तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या कर रहा है. Okay, so then based on that you can trade. This is the simplest indicator, right, for you to make money. And because it is higher time frame, आपका वो क्या बोलता है, you will get a more confirmed signals, right? Fluctuations भी कम है and all that. But yeah, आपको daily trade नहीं मिलेगा यहाँ पे, right? This is hardly in this whole cycle which is around 45 days. आपको तीन ही ट्रेड मैक्सिमम मिलेगा एक साइकिल में. But at the end of the day, what counts is to make 3 levels of profit. जो भी है from the start or whatever point, आपको 3 लेवल का प्रॉफिट टारगेट लेना चाहिए. मिनिमम 2, अगर 3 मिला तो बहुत अच्छा. And that 3 can come in 1 trade, 2 trade or 3 trades also, right? So, and that is the reason you have to go and backtest to figure out that how many periods, how much profit you are able to make. Obviously, there will be periods where you will not be able to make the 3 targets, right? Maybe this is like a sideways. Let's see यहाँ पे क्या होता. यहाँ पे थोड़ा फ्लैटिश था. So, then क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे ऊपर गया. And my time cycle is here, right? Ending here. So obviously my short level was here because यहाँ पे resistance है. तो यहाँ पे अगर ब्रेक हो तो यहाँ पे आपको perfect short मिला है. तो एक टारगेट मिला है आपको and then 2 टारगेट मिला है. And ideally, if I were you and I was in the beginning, I would book 50% here and 50% here. मुझे 2 टारगेट मिला है and it is also close to the end of the cycle. तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा. Then again, if it closes here, I would again initiate the long and I would got one more target. तो ऐसे भी आपने 3 टारगेट्स निकाल लिया. Even in a narrow range like this, you have extracted 3, right? So if you look at this period, यहाँ पे आया, price is anyways reacting from here, right? यहाँ पे एक टॉप बना था. Exactly at स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सुमित जी. कौन सा लेवल? नहीं शो हो रहा है. आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए. देखिए यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, टाइम पीरियड खत्म हुआ वहाँ, यहाँ पे आपका शॉर्ट सिग्नल आ गया. तो आपको एक टारगेट मिल गया, राइट? यहाँ पे आपने 50% एग्जिट कर लिया एंड देन योर स्टॉप लॉस गॉट हिट ऑन द अदर 50%. तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है देन यू हैव ए चॉइस, यू कैन इधर रिवर्स द ट्रेड. मतलब यहाँ पे रिवर्स नहीं करके यहाँ पे रिवर्स करना था, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे यू कैन गो लॉन्ग बिकॉज एनीवेज इट टुक द सपोर्ट नियर दिस जोन, राइट? तो यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे. इफ यू मिस द ट्रेड नो प्रॉब्लम. तो इफ यू वेंट लॉन्ग, यहाँ पे भी आपको एक टारगेट मिल गया. तो यहाँ पे 50% मिला, यहाँ पे 50% मिला. अगेन क्रैक किया, ये टाइम साइकिल आया, राइट? सो टाइम साइकिल में यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड दिस वन. बट दिस इज
see, if you are on the long and if you exited here, right? But you should not exit here because see, price ने यहाँ पे close नहीं दिया है, तो your stop loss, you are trailing still here, ideally, right? तो यहाँ पे जब close हुआ, then your stop loss you have to trail. So ये जो trailing stop loss है, ये आपको समझना है अच्छे से. Because see, यहाँ पे price was in the middle, right? तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा. Assuming you went long here because there was a reversal from here, you went long here. अगर ये प्राइस ने यहाँ पे ब्रीच कर दिया होता तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लाता, बट प्राइस ने साइडवेज था, तो ये स्टॉप लॉस इज स्टिल हियर एंड यू आर स्टिल लॉन्ग. जब ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ तब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं. एंड माय सजेशन इज इफ यू गेट योर 2 टारगेट्स, you exit and book it. That is what I would recommend. In the beginning, till you make some funds, you stick with 1-2-1-2 rule. Whether you're doing punctually, whether you are doing day trading, whether you are doing swing trading, just follow 2 targets in the beginning. When you get your 2 targets and कभी-कभी आपको 3 भी मिल जाएगा because of the momentum, तो भागिए. I mean, if you get your 3 targets, just close and don't trade for that cycle if you don't want to. On that stock at least, go to something else. Book your profits. Learn to book more profits than losses. That's how you will understand that there is a way to make money in trading. And stop loss को safe distance पे रखिए, because if you trail your stop loss too close, that is when it tends to hit. There are many ways of doing that. You can place an alert and then you simply observe price क्या कर रहा है, right? I mean, when it reaches that level, so you will feel that अच्छा price यहाँ पे है, मैं यहाँ पे stop loss रख दूँ. So your stop loss will definitely get hit and price will move up. You will keep staring at the screen, right? Nothing else you can do. But if you follow the system properly, you will not trail your stop loss too close, right? You will still keep it here. Max to max, you can keep it in the middle. ये इसका middle calculate करके आपको exactly middle पे रखना है. Especially when price is here. If you can't withstand this much of loss, but ideally you should keep it here. Until price action clearly takes it above this level, ये कैंडल पे आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं. That's it. And my suggestion is if you make 2 levels profits, तो आपको तुरंत exit कर लेना है. और 2.5, let's say यहाँ पे हो गया and then price is reacting. तो whether you book it here or here, that's immaterial, right? Anyways आपको 2 ही टारगेट मिलना था यहाँ पे, because प्राइस यहाँ पे आया फिर नीचे चले गया, right? तो whether you book it early or book it late, more often than not, your 2 targets is achieved. Okay. तो ऐसे कीजिए, you will see in some periods where you will get phenomenal profits, right? मान लीजिए ये period was a perfect, kind of trending period, right? Price यहाँ पे resistance लिया, यहाँ पे support break किया, right? 2 घंटे का candle, right? तो यहाँ पे आप short हो गए, आपका 1, 2, almost 3 मिल गया, यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पे मिल गया, right? तो आप भागिए, यहाँ पे profit book करके आप भाग जाइए. यहाँ पे तो आपको 4 भी मिल गया होगा, 5 भी मिल गया होगा. I mean, this is where you have to extend. And you will say that I want to extend my levels below 1. तो देखिए आपको कितना मिला है. आपका शॉर्ट लेवल यहाँ पे था, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल मिल गया. तो दिस इज योर बोनस. आपका 2 मतलब साइकिल का प्रॉफिट 1 में मिल गया. तो इवन इफ यू गेट लेस हियर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. You can expect something less here because you got some more profits here, right? So in this cycle, even if you get 2 after booking 3, 4, you are happy. And trailing rules, try and understand this, right? तो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे close हुआ trailing here, इसके नीचे close हुआ. Look at this candle closed, not this candle. This candle closed, you are trailing here. This candle still did not close, so you are still trailing here. This is the main thing, right? Until and unless a candle closes, don't trail your stop loss too close. यहाँ पे जाके आपका कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे, तब जाके आप ला सकते हैं स्टॉप लॉस. तो तब तक आपको पेशेंटली यहाँ पे बैठना है. और अगर बैठने का क्षमता नहीं है तो आपका अगर 2 टारगेट्स मिल गए, आप 80% स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ओनली 20% को जाने दीजिए. So at least 20% will not take away most of your profits, right? 20% या 25% रखिए, बाकी को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए पोजीशंस को. That is how you are only going to trail. And this 25% would have given you, how much?
एक दो लेवल एक्स्ट्रा प्रॉफिट देके जाता है, and some periods, and this is not going to happen in every period. This kind of trending moves happens very rarely. This was October period. This was again this was a very trending period. If you look at this period, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा. तो देखिए यहाँ पे साइडवेज था, but price took multiple supports around this level. So ideally, if you're an aggressive player, you should go long here itself. If you're conservative, you will go long here. तो आपको एक टारगेट मिला है यहाँ पे, यहाँ हुआ आपको, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं गया होगा. आई मीन इट इज ऑलमोस्ट कमिंग वेरी क्लोज. इट डिड नॉट, इफ यू सी देयर इज स्टिल अ गैप, राइट. तो इसका नीचे क्लोज नहीं हुआ है. तो अगेन इट वेंट अप एंड आपको दो टारगेट फिर से भी मिल गया. अब अगर यहाँ पे होता तो आपको तीन टारगेट मिला है आपको. तो दो टारगेट तो आपको मतलब नोबडी कैन टेक. एक्चुअली ये इससे ज्यादा मिला है, तीन टारगेट मिला है, उसको ऊपर एक्सटेंड करना है आपको. यहाँ पे ऊपर एक्सटेंड करना था आपको. तो यहाँ पे देखिए, it right now from here it gave two targets and you would have initiated your trade where either here, yeah, here, right. तो यहाँ पे अगर क्या होता तो आपको एक दो तीन ऑलमोस्ट चार, चार नहीं छोड़ो, आपको तीन तो मिल ही गया होगा, बिकॉज दिस वाज a strong support and you went long here. यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया. You can actually double your quantity here. If I were you, I would use this kind of a candle to add more quantity and then I will get target two. कौन सा कैंडल, ये जो देखिए ना, ये जो परफेक्ट कैंडल है, ये सब एकदम लाइन पे आके जो रुक जाता है ना, with a long lower wick or an upper wick, अगर rejection, so this is clearly indicating support here on this line. Even if you don't go long here, यहाँ पे तो आपको long जाना ही था with a stop loss below this. But ये candle was not ideal, right, for going long. This candle was ideal for going long here. This was after the period. This was your perfect candle to go long. And यहाँ पे डबल सपोर्ट मिला है आपको. You can actually increase quantity if you want to at this level, because your stop loss is also here just below this. So even if you go long here with an additional quantity, your stop loss is here because price has crossed this level. So you have trailed your stop loss to here, and it came very close to hitting a stop loss and reverse, which gives you the confirmation ki bhai, this level has been protected. So this will come to you only when you spend time, right? No matter how much I speak, I will not be able to explain or decode all the rules for you, right? That is very, very difficult. Trading can't be taught, right? I can only give you tools. Trading आपको खुद से ही सीखना है. Again here, right? Consolidation. High break हुआ previous levels का. ये perfect candle था ये long होने का, right? After the time period. यहाँ पे एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट. तीन टारगेट में आपको भागना है, राइट, टू स्क्वायर ऑफ एवरीथिंग एंड रन. एंड देन अगेन यू वेट. यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. यू ऑलरेडी गॉट योर थ्री टारगेट्स. व्हाई चेज एनीथिंग. तो आप अगर 2-3 साल का बैक टेस्ट कर लेंगे, एंड इन फ्रंट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 1 ईयर का बैक टेस्ट, राइट. तो आपको कितना टाइम लग सकता है? एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं ये बैक टेस्ट. तो यहाँ पे देखिए प्राइस इज रिएक्टिंग. सो दिस वाज योर शॉर्ट कंडीशन जस्ट आफ्टर दिस पीरियड. आपको एक टारगेट मिला है, राइट. एज सुन एज यू गेट वन टारगेट, रिमेंबर दैट योर ट्रेड इज रिस्क फ्री एज पर योर रिस्क रूल्स, राइट. तो यहाँ पे अगर रिवर्स हो रहा है तो आपको भी रिवर्स करना है ट्रेड. तो फिर आपको एक, दो, तीन टारगेट्स मिल गया. तो वन ऑन द डाउन और हाफ टारगेट यू कैन से हियर, एंड आपको तीन टारगेट. सो व्हेन यू गेट दिस थिंग, यू सिंपली डोंट ट्रेड इन द सेकेंड हाफ. एंड यहाँ पे तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट डे था, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना ही नहीं था, राइट. यू शुड हैव वेटेड. You should have waited for things to settle down. And when you see that 50% से एक दो तीन चार पाँच छः सात levels, right. So when it has crossed above 50%, यहाँ पे आप फिर से join कर सकते थे. This was your perfectly good candle to go long again. Again you would have gotten 1, 2, 3 targets. So this was an exceptional good period. आपको 6 targets मिल गया एक period में. तो ऐसे आपको you will not get everything. आपको 3 ही targets is enough, 2 to 3 targets in a period. एंड हिसाब कीजिए ना, मतलब कितना प्रॉफिट्स होगा आपको. 2 साल बैक टेस्ट करके देखिए.
Again here, price made a bottom here, sort of made an, this thing here, and then broke above. This was your perfectly condition to go long after this cycle period ended. आपको एक टारगेट मिला, दो टारगेट मिला है. You have a choice here, right? Either you book everything or you wait for the third target. If you did not book, you lost one target. That's it. And यहाँ पे आपको, if you are trading, then you should definitely reverse on this condition. But यहाँ पे आपको थोड़ा मौका नहीं मिलेगा because of the gap down condition. But you can still do it, right? I mean, here also you can do, and you can get 1, 2. That's it. Because you gave away this, you should reverse and try to get at least one target from here to recover whatever you lost. And at that point, you should close that chapter on this cycle. 3 targets ही आपको target करना है एक cycle में. That's it. That's more than enough. अगर ज़्यादा पे जाएंगे तभी वो प्रॉब्लम होता है, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या किया है. प्राइस वाज साइडवेज, दिस वाज द हाई, दिस वाज द लो ऑफ द लास्ट पीरियड. देन प्राइस यहाँ पे तोड़ा है. Now this was such a big candle, you will probably miss the trade, right? And ये almost 50% पे आके trade नहीं करना है, right? So this was something you missed, but price यहाँ से reverse किया है. This was your perfect condition to go long. तो आपको एक टारगेट मिला है. योर स्टॉप, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट? स्टॉप लॉस एक पॉइंट से भी ब्रीच नहीं हुआ है. इवन व्हेन इट क्लोज्ड अबव, योर स्टॉप लॉस इज बिलो दिस लाइन. एक बार आया, दो बार आया, राइट? सो आइडियली आई वुड ऐड हियर. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, नो, सेम पैटर्न. तो ये सब पैटर्न्स आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे चार्ट्स को. सेकंड, सेम पैटर्न्स आर कमिंग हियर ऑन द लाइन. व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस, दिस इज योर इंडिकेशन कि भाई यहाँ पे रिवर्स होने वाला है अभी. ऐसे कैंडल जब बनते हैं, सेम कैंडल्स टाइप्स with this long, and then this is the double bottom. तो आपको यहाँ पे लॉन्ग होना है. इफ यू डू कांट बी लॉन्ग हियर, यू लॉन्ग हियर, एटलीस्ट यू गेट वन टारगेट. यहाँ पे होता तो आपको दो टारगेट मिलता. सो दिस इज द थिंग यू कैन मॉडिफाई बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. तो आपको एक भी पीरियड अभी तक मिला है कि जहाँ आपको 3 मिनिमम टारगेट्स नहीं मिला है? यू बैक टेस्ट एंड शो मी इफ यू कैन फाइंड. यहाँ पे लॉन्ग होना था, but unfortunately it did not hit your target. It would have, but यहाँ पे अगर लॉन्ग हो रहा है, तो imagine this, your stop loss is not here, right? Your stop loss is at least here or in the middle, right? That is what I said. If you are not comfortable here, you should keep your initial stop loss in the middle. So if you kept it in the middle, since this did not close above, your stop loss did not move at all until this thing happened. And when this thing happened, you got your one target. And at this point, you can't lose the trade. You got your one target. See, कभी कभी क्या होता है जब ये टारगेट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, because what happened was this was a massive move. I mean, imagine how much you could have made in this one, this period. This was the magical run, right? यहाँ पे consolidation, right? Obviously, you will probably not initiate trade here, but यहाँ पे आपको trade initiate करना था. Yeah, because it broke above and then sustained. तो अगर क्या होता है, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, 5, 6, 7. This was a magical period. And because, you remember that if you get a magical period like this, next period में आपको either avoid करना है या सतर्क रहना है, right? Because obviously when you made so much money, यहाँ पे तो आप थोड़ा बहुत, consolidation होगा ही होगा. And that is exactly what happened here. It was a period of consolidation, right? So ideally you should entirely avoid this period if you want. If you traded this, you don't need to trade here. जब आपको दो साइकिल का जो प्रॉफिट था, आपने एक साइकिल में ही कमा लिया है. You should remember that आपका एवरेज प्रॉफिट 3 ही है. And when you get a 7 means you have दो गुना पैसा कमाया है. So you rest in this period. Avoid trading in this counter in this period. Go to something else. That is how you will be able to retain the profits, right? So whether it is going up or down, this is giving you peaceful trades, right? I mean, that is what I feel. I don't know how you feel, but this is the most beautiful indicator that you can use, right? And even a 5-year-old, if I teach him the theory, he should be able to use it. I think he will be able to use it better because he is not polluted with any other knowledge, right? उसका mind दिमाग में fresh होगा, तो fresh concept भी वो ले पाएगा easily.
The problem that happens with you guys is you guys know so much, right? इतना कुछ भरा पड़ा हुआ है because of you have learned from so many different concepts and teachers, right? That you are not able to grasp these things easily. That is what I feel may be happening, right? I don't know what is the real challenge, but that is a challenge. So you have to have an empty mind. You have to empty your mind to be able to receive, right? Some new things, new concepts. That is what is missing. See, यहाँ पे you should have actually shorted here. So एक short बना है, but immediately reversed. So now see, if you make an error of actually यहाँ पे short ठीक तरह से नहीं बनाया, राइट? बिकॉज एक ही कैंडल क्लोज किया है, उसके बाद रिवर्स। ऐसे जब होता है ना, तब आपको इमीडिएटली बुक कर लेना चाहिए, इन माय व्यू, राइट? यू डोंट वांट टू वेट टिल इट हिट्स योर स्टॉप लॉस, बिकॉज वो एक ही कैंडल में पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, राइट? और यू प्लेस इट एट 50% एंड लेट इट हिट योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको रिवर्स कर देना चाहिए था ट्रेड. If you did that, you would still, so maybe in this period you got one stop loss, you can say, but imagine here you could have recovered that loss and from here, right? You आपको 3 टारगेट्स मिला है यहाँ पे, आपको मान लीजिए आपने एक टारगेट अगर लॉस भी दिया है, तो फिर भी आपको ये प्रॉफिट में ही क्लोज करके गया है. इवन हियर यू कुड हैव इनिशिएटेड अनदर लॉन्ग एंड यू गॉट वन टारगेट, तो यू गॉट 1 2 3 and 4 and you lost one, so still आप 3 मिल गया आपको टारगेट. So you will not find any period, right, where you would be net losing money. एक भी साइकिल आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको losing money if you understand the patterns, if you understand the time, and if you trade according to time and pattern. Time, pattern, price, तीनों आपको देखना है. When they are in convergence, right? यहाँ पे देखो आप multiple times bottom बन रहा है, multiple times, एक बार, दो बार, तीन बार. So when you get this kind of candle for a fourth time, right, and then a move up, you know that it's going to be big, and it's happening right after the midpoint. देखा है, perfect candle है, perfect candle, perfect location. इसी को मैं बोलता हूँ perfect candle. This kind of candles, you have so much of support here. And अगर आपने आपका लॉस भी you have to again keep your loss only this much. आप एक कैंडल लॉस लेके आपको ये ट्रेड करना है, तो एक दो तीन टारगेट्स इजीली मिल जाता है. So that is what it requires. Unfortunately, unless you go and spend time with your chart, with this indicator, you will not be able to grasp it, trust me. आपको टाइम बिताना ही है. मैंने तो सब कुछ मतलब मेहनत करके ही दिया है आपको, मतलब इतना सारे कुछ वर्क हो रहा है behind the scenes, right? It is automatically plotting. There is a lot of work happening behind the scenes. This is in terms of lines of code, you won't imagine, like if your Gann level is let's say 300 lines, this is easily 1200 lines of code. जितना code मुझे लिखना पड़ा है, because it had to combine time and price, which is always a very difficult thing in my view. दोनों को, there is no other indicator I have which combines time and price. Only this one combines time and price, and because I combined that, it became very complex, because these are also very fixed cycle, according to the solar cycles, right? All these time periods are fixed. These are not dynamic, right? And it works beautifully. When I backtested for the first time, I was kind of mind blown looking at how effective, such simple things can be. Right. I think you are not spending enough time with your chart, with your indicator, and that is why you are not able to ask more intelligent questions, right? And I hope that you'll be able to rectify that, and ask more logical questions, more intelligent questions, right? And that will only come if you observe more, right? That is the only way. Anyways, I've shown you enough in terms of backtesting this tool. I think this is one fantastic tool, especially for people who are busy and still want to make money. Nothing can beat this, in my view, right? उसके अलावा तो आपके पास है ही already other day trading tools. You have one fantastic tool in terms of Gann pressure date. उसको जाके 3-4 बार देख लीजिए फिर से. अगर कोई clarification है, you ask me. So if you use Gann pressure date, if you use this indicator,
That's more than enough. And use either punctually or Gann square of 9. तो ये तीन चीजों आपने अगर मास्टर कर लिया, right? One of this, 3 out of this 4, that's more than enough. You don't need anything else. And उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे strategy सिखाए, just purely time cycle based, right? आप एक I told you one, that God cycle, right? Remember, if you one day I showed you, तो उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं. Once you have made enough money, you just leave one lot, based on that time cycle, right? And in future I will show you many more interesting things, right? I mean, this weekend I'm doing one thing on birthday strategy, right? That is also another very, very simple and effective strategy. And you trade based on your birthday, not my birthday, your birthday, right? Your birthday or your whatever, wife's birthday, your son's birthday, daughter's birthday, whatever, right? So let's say वो क्या बोलते हैं ना वो let's say you want to generate some wealth, I mean generate some funds, let's say, right, for your child's education. So that strategy that I'm going to teach on Saturday is going to be very, very effective. It's like instead of doing SIP in a mutual fund, you do SIP based on your birthday. आप 5 स्टॉक चूज कीजिए जो आपका फेवरेट है. Every time your daughter or son's birthday comes, you just let's say you take 10,000, yeah, 20,000, whatever capital you have, divide it into 5 parts, उसमें डाल दीजिए, right? You will be mind blown when you back test and all that, how much you will make in 20 years, 30 years time frame with very, very small. And uska headache nahi hai, unlike mutual funds, it's completely transparent. You are managing your own money. The risk is also defined for you, right? So it is only long only strategy. You cannot short. So it is investment only. There is another version where you can use the anniversary date of the stock itself. So every stock also has a birthday, no? The date of incorporation and all that, right? And those who are attending, I'm also going to give you the date of incorporation of all the 4,000 companies. I have a list. So, and I also have an indicator which I'm going to give, you lifetime access. It's called this anniversary investments. Oh, मैंने आज ही बनाया है, right? This one. So this one also I will give this indicator, right? So it will help, with your back testing and all that, level plotting and all that. It makes it easy. तो आपको easy हो जाएगा. You will get all this. So this is a fantastic one, if you want to build, wealth for long term. This And this is not, Saturday. एक दिन का नहीं है ये. मतलब this is, let's say, you should do this strategy at least for 10 years. 10 years minimum आपको back test करना है. हाँ, Saturday को है, right? That's a paid workshop. So, but the value that you will get, right, by such simple things is immense. So if you have the time, please attend that. I think I shared the registration link in the group itself, the main group, so you can attend that. Yes. So see, my suggestion is whatever profit you are making from this strategy, right, whatever I was just showing on the screen, you make an SIP based on you pump those money into your 5 favorite stocks, and don't look at it unless there is a clearly defined stop loss, right? अगर वो stop loss नहीं आता है, you forget about it for the next year. फिर से आप जब बर्थडे आए फिर से आप देखिए, right? Like that. You have to only look at that strategy once in a year. इससे peaceful strategy आपको कहीं मिलेगा? I can guarantee you will not get any more peaceful strategy than that, which actually makes you money over a long time. And I will show you. I mean, you will give me a stock, I will backtest on that stock on your given date. I will not even choose the date. I will not even choose the stock. I will take one random stock, one random birthday, and I will show you. Okay, that is what I'm going to do. और कैंडल वाला का भी रिकॉर्डिंग का कुछ दिया था आपने? कैंडल आपने रजिस्टर नहीं किया था ना? हाँ, रिकॉर्डिंग का कुछ ये दिया था कि रिकॉर्डिंग किसी का चाहिए. हाँ, तो if you're interested, you let me know. There is a small fees for that. आपको मिल जाएगा. तो I think few people attended. सुमित जी, आपने बैक टेस्ट किया था? सर अभी तो मैंने लाइव क्लास ही नहीं अटेंड की थी. मैं आई हैव टू वॉच द वीडियो.
हाँ वो देख लीजिए. I mean I know you have 30 days, but you will be mind blown. And then this birthday is going to be another exciting one. That is Sir, more this like, I intraday, know right? about this. Sir, I know about this birthday one, but I have still registered for the same. अच्छा अच्छा, वेरी नाइस. तो बर्थडे वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस, राइट? इट इज नॉट फॉर, आपको Correct. Yes. साल में सिर्फ एक ही डेट देखना है, एक ही बार ट्रेड लेना है अंटिल नेक्स्ट बर्थडे. तो बर्थडे टू बर्थडे स्ट्रेटेजी. राइट. तो आई मीन द रूल्स आर वेरी सिंपल, बट आई हैव आल्सो डेवलप्ड सम टूल्स, लाइक ये इंडिकेटर में आपको दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए, तो आप बैक टेस्ट करने में इजी हो जाएगा. नहीं तो आपको मैनुअली जाके ये सब डेट्स ढूंढना होगा ना. Yes. तो Correct. Correct, sir. with my indicator it will automatically plot the dates, and उसका levels भी मार्क करके दे देगा. एंड आप अगर राइट में जाएंगे ना, स्क्रॉल करके पूरा हाई लो मार्क करके सब डेट्स का, सब ईयर का मार्क करके देगा, तो आपको कैलकुलेशन में भी इजी हो जाएगा, है ना. तो मैंने ये सब अभी आज बैठ के ही बनाया है. एंड मैं ये इंडिकेटर भी इंक्लूड कर रहा हूँ पैकेज में, राइट, जो भी रजिस्टर कर रहे हैं. And I also have the birthdays, so you can use it in two ways, right? You can use it on your birthday, and you can use it on the birthday of that particular stock. जिसका लिस्ट में I have a list of 4,000 stocks. Sir, उसका भी can मैं we can we add astro point in any of the indicators like for the gold and silver? आपको अगर लॉजिक देखो, एस्ट्रो का मेन प्रॉब्लम है कि एस्ट्रो का डेटा इज नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिंग व्यू. देखो, ऑल ऑफ माय थिंग्स इट इज बेस्ड ऑन डेटा दैट इज अवेलेबल इन ट्रेडिंग व्यू, एक्सेप्ट द मून साइकिल, जो जिसका डेटा मुझे मतलब हार्ड कोड करना पड़ा था, राइट. एक लूनर साइकिल कुछ Okay. है ना इंडिकेटर, वो डेटा हार्ड Yes. कोडेड है. इट इज नॉट डायनेमिक, इट इज नॉट फेचिंग, राइट. तो ओनली प्रॉब्लम इज जो जो एफिमेरिस का डेटा है, जो जिसका वो प्लैनेट्स का जो पोजीशन का डेटा है. Now, I have to do some research here. I have to figure out, how to do all that. I mean, if you know of an easy way, let me know. If there is a plugin or something, I have to maybe do some research. But Astro में तो ये, there is so many things that I get confused as to देखो, the other thing I want to say is, you think that this is not based on Astro, but this is based on Astro, because this is encoding sun cycle. Sun cycle is nothing but Astro. So this Correct. is one indicator that includes everything. The sun cycle, the vibration of that stock, the levels are calculated appropriately, right? So this is a very, very scientific, and which is why, if there is one indicator, no, I would recommend even to a 5-year-old, this is the one. You should definitely use this, right? And things like the birthday and all is, it's very easy to use, right? When you have excess cash, instead of parking it in FDs and other things, right? Obviously you should park some in FD. The emergency fund you should keep in FD. But let's say any money that you don't need, right, in the next 10 years, and let's say you have to create a future, right, for your child, marriage ho, education ho, yeah, aapko, you have a dream, right? Let's say you want to buy a house, you want to buy some property, whatever it is, but that goal should be at least 10 years away, right? So if you start today, you can make phenomenal wealth using that strategy. Very, very simple, and you'll be mind blown, when you test it, right? तो आपको 4 या 5 स्टॉक चूज करना है, and every time your birthday comes, you invest. That's it. And either you invest on your birthday or you invest on the birthday of that stock. You can do both. The only thing is, if you use the birthday of the stock, you are allowed to short. But if you use your birthday, you are not allowed to short. It's a pure investment strategy. There is only difference, right? So yeah, I mean, details में बात करेंगे. In fact, rules are very simple if you ask me, right? But I will show you with the backtest in the live webinar, right? So that it will be help you do your own backtest. That is the only thing I will spend time on, giving more and more examples, right? So I will ask you what is your stock. Maybe I will take few like from the audience itself, and I will backtest live, right? So that is the reason why I kept it 2-3 hours. Otherwise तो rules अगर समझना है तो वो तो मैं 10 मिनट में भी rules समझा सकता हूँ, right? But yeah, वही है. तो ठीक है. सर सर हाँ गान बताइए. स्पेशल या टनल ओनली कुछ है क्या? क्या? टनल ओनली, टनल टनल डिकोडिंग.
टनल डिकोडिंग वो सर ने एक बुक लिखा था, वो तो अभी तक आया नहीं मेरे पास। तो अगर आएगा उसमें कुछ समझ में आएगा तो फिर देखेंगे, अभी तो कुछ और नहीं कुछ है। टनल रिकॉर्डिंग नहीं? नहीं है मेरे पास और एक स्क्वायर ऑफ वो। लाइन का मूविंग एवरेज जैसा कुछ है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, लिंक नहीं, फोटो दे दूंगा अगर हो सके तो। वो किसी ने इसमें बनाया, क्या बोलते हैं इसको, और एक सॉफ्टवेयर है ना, क्या नाम उसका, एक काम कीजिए, एमी आप वोकर बताइए, एफ है। आप कब फ्री है आप बताइए, मैं आपके साथ एक अलग से जूम कॉल कर लूंगा। अच्छा। अगर आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी है जो आप मतलब कोडिंग कराना चाहते हैं, देन वी कैन डिस्कस एंड डू दैट राइट ओके सेपरेटली। ओके ओके। तो आप मुझे बताइए आप कब फ्री होंगे, मैं आपको एक जूम लिंक भेज दूंगा, वी कैन डिस्कस एंड वी कैन ठीक है, मैं आपको टेक व्हाट्सअप इट। कर दूंगा। हाँ हाँ। नहीं, मुझे रूल समझना है ना, तो आप थोड़ा मतलब यू विल एक्सप्लेन द रूल्स टू मी, हाँ हाँ हाँ। एंड ओके उसके बाद ओके मैं आपको ओके बताऊंगा। ओके कर सकते, सी इफ इट इज मैथमेटिक्स everything can be done, right? So only thing is you have to understand the mathematics behind it, ओके right? ओके। All of these are numbers only, no? What have I done? Have I done anything, complicated? Yeah, of course. I mean, testing is really complex because kabhi ye pine script, goes into a loop, right? And becomes very difficult, to get it out. But since I have been coding all my life, it comes naturally to me, right? तो and AI is also getting better over time, I feel, right? अभी मैं जब शुरू शुरू में करता था, एक एक इंडिकेटर डेवलप करने में ऑलमोस्ट इट यूज टू टेक मी 1 वीक। अभी तो मैं एक एक दिन में एक इंडिकेटर बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू टेल, हाउ टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम इट। मैंने इतना इंडिकेटर्स बनाया हूँ अभी। राइट नाउ आई हैव प्रॉब्ली बिल्ड अराउंड 18 इंडिकेटर्स राइट इन टोटल। तो अभी तो मेरा वो ग्रास्प में आ गया है। ऑल आई नीड इज जस्ट द थ्योरी, जस्ट द अंडरलाइंग मैथ। अगर मुझे समझ में आए तो इंडिकेटर में एक दिन में बना सकता हूँ। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव नाउ। So anyways, if you feel there is something valuable for you, most welcome. I will help you to build that, no problem. Okay. But it has to be useful, no? I mean, first you have to explain to me how useful it is, and if I feel that it is really useful, then I will, take the call accordingly, right? If I feel that it is really useful, then I will, of course, love to build it. चलिए, I mean, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। And if you have any questions, please, my only sincere request is, please spend time with your indicators. ये जो मैंने दिखाया जो law of vibration है, and either the square of 9 or punctually, and your GPDs. These are your four main things I think you need to master, right? Gann pressure date option strategy, because that is a very, very special one that can really give you enormous returns, right? If you follow it consistently. Then this swing strategy, on the 2-hour time frame, using this law of vibration indicator. That is the second one. Third one is, your Gann square of 9 with the Gann time cycle, right, as an added thing. And the fourth one is Gann Panchuli. If you at least learn 3 out of these 4, then you will be set for life, right? And I keep teaching you all these other things, right? I mean, the magical candle, this, that, these are also very effective strategies. You can use that, right? So strategies wise, I think you have enough here, right? You don't need more than this, to be honest, right? आपको अभी जो जरूरत है is to sincerely go and practice and make it your own. And it will not be your own, and trust me, unless and until you are convinced that it works for you, and you will be only convinced it works for you if you do the backtest. There is no second thoughts to it, right? So you will have to make the effort because it's your brain, it's your eyes that needs to be trained, not mine, right? मेरा तो train हो चुका है जितना भी हो सकता है, right? I mean, of course it will get better, but I don't see, if I backtest, my eyes and my brain will be trained, not yours. If you have to train your eyes and your brain, then you have to backtest, right? So that is the only, I think, missing link, because you have enough knowledge, I feel. You have enough tools. जो बाकी है is to fill the gap, right? And that is what practically applying the strategies and making money. The only gap is being able to complete the backtest.
Okay, so please cautious कीजिए, and maybe I'll skip the next week, right? Just so that all of you give enough time, and I will hold this another Q&A session in 2 weeks from now, which is around 28th, right? 2 weeks from now, 28th of April. So that way, you will have enough time, and maybe one more I will do somewhere in the middle of May. So that way, anyways, you will get enough time. So you are getting 4 weeks, right, to complete all your testing, implementation, asking questions. I hope that should be enough. I mean, beyond that, I don't know. Even if I give it for you for 2 years, it will not help unless you do the back test, right? That is the harsh truth. Yes, yes. तो कीजिए, आई मीन जितना हो सके. इफ यू कांट डू एवरीथिंग, एक एक हफ्ते में एक एक कर लीजिए ना. मैं 3 या 4 ही तो मैं बोल रहा हूँ. यू सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ कि ओके दिस वीक आई एम डूइंग दिस. ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये तो मतलब 2 दिन में आप खत्म कर सकते हैं 2 साल का बैक टेस्टिंग, राइट? एंड गैन स्क्वायर ऑफ 9, यू डोंट हैव टू डू इट ऑन टू मेनी, राइट? आप एक या दो ही चूज कीजिए, उसमें आप आइडियल सेटिंग कीजिए. मे बी चूज व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड यू वांट टू डू फॉर व्हाट स्टॉक, and then choose your time frame and then do the back testing, right? Pancholi mein to already everything is designed for you, so you don't have to do many. Back testing easy hai, you just have to drag the thing, right? And what else? And gpd भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट? तो ये 3-4 अगर प्रैक्टिस कर लेंगे काफी है. और क्या चाहिए? और क्या है सुमित जी? इज देयर एनीथिंग एल्स? नो, No, sir. राइट? तो ये 4 काफी है. एंड साइड डिश तो मैं देते रहता हूँ आप लोग बर्थडे स्ट्रेटेजी, दिस मैजिकल कैंडल, वो तो आते रहेंगे छोटे छोटे टिप्स. बट and each one of them is beautiful in of their own. So you adopt how much you can, right? मतलब एक दिन में एक आदमी कितना ट्रेड कर सकता है, right? I mean hardly you will do, you can use 1 or 2 setups on 1 or 2 stocks ना. So for example, you have to develop an algorithm कि मुझे आज क्या अप्लाई करना है, right? For example, if it's a Gann pressure day, you should always apply Gann pressure day, especially if the conditions are right. आपको अगर बड़ा सा गैप अप गैप डाउन हुआ है, there is a best strategy to apply on a Gann pressure date. So first you see, okay, is it a Gann pressure date, right? Then आपको अगर पंचुअली करना है, then आपको देखना है कि is it a special day, is it a which day and all that, right? Moon cycle day है कि नहीं. So punctually is a little complex, so don't go to that. My suggestion is do Gann pressure date, then do square of 9, and do the law of vibration thing, right? For the swing. ये 3 पहले master कीजिए, and then once you have mastered that, if you want to try out a different variant, then try the Pancholi, right? Because Pancholi is a little complex, I feel, right, in comparison to the rest. Because वहाँ पे moon को strength देखना है, ये देखना है, वो देखना है, that is complex. And maybe in the end, once you have completed everything, I can do one refresher course on the Pancholi with a little bit advance. But अभी जाके कुछ फायदा नहीं है, because I'm seeing you're struggling with the basics right now. तो अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है. तो उसका फ्यूचर में एक क्लास डाल देंगे, फॉर यू गाइज. whenever I do an advanced Panchali, I'll invite all of you, no problem. But right now I don't see the need because people are still struggling with the basics. Okay, so that's all for today. Okay. Uh, keep yeah, keep back testing and keep asking questions, right? That's the only way to help you bridge the gap, right, from where you are to where you want to be. Okay. Okay. All right. Thank you, sir. Yeah, take care. Bye bye.